On your screens will now be the number of JCBs and the bulldozers that arrived today in Jahangirpuri in the northwest area. 9 MCD bulldozers at least to raise down illegal constructions, specifically commercial establishments and shops on the same area, on the same street where that communal violence had fled. Security arrangements were tightened ahead of the demolition drive. Shops were raised down specifically, but it was an absolutely high voltage drama until the Supreme Court announced the status quo. But even then, the MCD says once we receive an official confirmation, we will then stop the demolition drive. It stopped at about 12:30 p.m. One of these shops here, as you can see, was raised by the JCBs and the bulldozers. It was a complete showdown here. Many people also angry. Many say it was unauthorized. It had to be pulled down. Take a look now. What exactly happened through the morning today in Jahangirpuri? Here's the timeline of the incidents. Dread, division and demolition in the national capital. At least 9 MCD bulldozers descended on Jahangirpuri, raising illegal constructions on their way. Security was beefed up in Jahangirpuri before the demolition drive began. North MCD sought over 400 police personnel. The security forces held a flag march in the area to keep troublemongers at bay. Amid simmering tension, locals began collecting their belongings, trying to save them from destruction. पुलिस का बड़ा फोकस्ड रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जी। और हम लोग असिस्ट कर रहे हैं जो भी एजेंसीज हैं, जैसे इस केस में एमसीडी का जो भी इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम होगा उसको हम लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से असिस्ट करेंगे। हमारा रोल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और उसी के लिए एडिक्वेट फोर्स प्रोवाइड करना। It was around 9:50 when India Today accessed the first images of bulldozers heading towards Jahangirpuri. अब ये धीरे धीरे करके जो गुसल चौक जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर एमसीडी का ये बुलडोजर बढ़ता हुआ आगे जहां हमने तस्वीरें दिखाई थी आज तक के दर्शकों को सुबह, उस तरफ बढ़ रहा है। और बस यहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ये बुलडोजर जो कुशल चौक है जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर पहुंचेगा। पुलिस का पूरा बंदोबस्त पहले से ही वहां पर मौजूद है। The demolition against illegal constructions began minutes later. At least 9 bulldozers tore down makeshift structures, illegal shanties, shops and buildings in the locality. Many of them allegedly on public land. ये कॉर्नर पर वो दुकान है, यहीं से उस दिन वो पूरा जुलूस दाईं तरफ बढ़ा था और उसी पर कार्रवाई। ये बुलडोजर यहाँ पर भी चलता हुआ, ऐसे ही 2 बुलडोजर आ चुके हैं और दोनों आमने सामने दोनों ही गलियों पर। एक बार जरा कैमरे से दिखा दीजिए, ये देखिए, ये दिल्ली फ्रूट जूस कॉर्नर पर ये हो रहा है अवैध निर्माण। नीचे में जूस कॉर्नर की दुकान और उसके बाद ऊपर में घर भी है, छोटे से रखने की भी। जो जिस तरह का अवैध अतिक्रमण यहाँ पर सड़कों पर हुआ था उन सब पर कार्रवाई हो रही है। This is the visuals on our screen. This is a tea stall that was there on the corner of Kushal Chowk. This is the same location where we saw Sonu Chikna firing that bullet from, after which he was arrested. नहीं, हम ये तो घर है, हमारा यही तो घर है, हम कोई दंगे मंगे में नहीं है। While demolition drive was underway, the Jamiat Ulema-e-Hind moved Supreme Court and obtained an order for immediate status quo. But the civic body continued bulldozing for at least 1.5 hours, with officials on ground saying the Supreme Court order is yet to reach them, despite an assurance by the mayor. बिल्कुल ये बंद हो गया। जेसीबी अब बंद हो गए? बिल्कुल बंद हो गए, सब वापस जा रहे हैं। सारे जेसीबी वापस ले जा? बिल्कुल वापस जा रहे हैं। कितने जेसीबी आए थे? 9 जेसीबी आए थे, आप यहाँ से देख सकते हैं, सब वापस जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो लग रहा था कि बुलडोजर शायद वापस जाएंगे, लेकिन ये बुलडोजर अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पर चल रहे हैं। जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि आदेश नहीं आया है, जबकि यहीं से कुछ मीटर की दूरी पर
जो मेयर हैं नॉर्थ एमसीडी के वो खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम उनको आदेश मिलने के बाद अब वो कार्रवाई रोकेंगे। The demolition drive then reached the spot where the riots had broken out. Encroachment around the mosque was brought down, while the mosque itself remained untouched. पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन, बीच-बीच में जो दीवारें हैं वो कंक्रीट की भी बना दी गई हैं। ठीक उस मस्जिद के सामने आज ये कार्रवाई हो रही है और मस्जिद के सामने से ही पूरी जगह से इसको गिराया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। The big question, was the bulldozer run a legitimate civic action or message to rioters in Jahangirpuri? With Pooja Shali, Anjana Om Kashyap, Kumar Kunal, Shreya Chatterjee and Arvind Ojha in Jahangirpuri, Bureau Report, India Today. So one of the shops that was demolished by the GCB sent by the MCD was this juice corner in Jahangirpuri, and now what is left are the shutters that have been pulled off this juice corner. There are bricks, there are some of the wooden panels and other elements and items from this juice corner. While the owners of the shop said they had the papers, nobody wanted to see the papers, but by then the demolition had happened. Remember, the Supreme Court then ordered a status quo, taking up the matter in an urgent fashion. But the MCD said they haven't received the personal copy yet, and only when that copy was received, the orders were given, the demolition was stopped. By then, at least 20 shops were razed to the ground. Take a look about the showdown and how the matter from Jahangirpuri reached early morning at the Supreme Court. At 11 a.m., the Supreme Court stayed this demolition drive. The top court intervened and instructed authorities to stop the bulldozers till the hearing on Thursday. But for over 1.5 hours, the bulldozers droned on, rolling down the streets of Jahangirpuri and demolishing all illegal structures. The bulldozers even reached the mosque, outside which communal clashes broke out on Saturday. Shops and other establishments were razed to the ground in a matter of minutes. कंस्ट्रक्शन पर, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन पर ये जो सीढ़ी है उस पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। अभी तक सिर्फ टेम्पररी स्ट्रक्चर पर ही चल रहा था। जो लोग जिनका ये घर है वो बाहर तक आकर खड़े हो गए हैं ताकि उनके घरों को ना तोड़ा जाए, लेकिन अब वो उन्हें बुलाकर अंदर ले जा रहे हैं। The demolitions continued unabated, but while all illegal structures were removed, officials didn't remove any part of the mosque. This is the location. This is the prime location from where the Shobha Yatra had passed. This is precisely the mosque where there was allegedly stone pelting also that started. And now what we see, take a look at that, completely demolition taking place. They are calling it the illegal establishments that is now being demolished. Angry locals were seen trying to save all of their belongings, questioning why their properties were being demolished as Jahangirpuri remained on edge. नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मस्जिद मंदिर के बाहर भी जो अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा उसे। Mind you, all of this was happening after the Supreme Court had stalled the demolition drive. The bulldozers continued with their mission, and it even prompted left's Brinda Karat to touch down in Jahangirpuri and stop the bulldozer. सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम में कहा कि भाई वी आर गिविंग अ लिमिटेड ऑर्डर विच इज स्टेटस को, मतलब यथास्थिति बनाए। जब मैं यहाँ आई इस विश्वास को लेकर कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा कि बुलडोजर चल रहा है, इसलिए वहां जाके हमें रुकवाना पड़ा। So how is this anti-encroachment drive continuing despite the Supreme Court clearly stating otherwise? MCD officials claimed they hadn't received any physical copy of the order and hence wouldn't stop their demolition squad. यहाँ से दुकानें गिनते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये पहली दुकान आप देख रहे हैं, दुकान नंबर 1, दुकान नंबर 2,
ये तीसरा जिसमें आप देख रहे हैं मोटर पार्ट्स का काम किया जा रहा था, तीसरी दुकान। उसके बाद चौथी दुकान दिखाइए, उसके बाद पांचवी दुकान, छठी दुकान, सातवीं दुकान आप देख रहे हैं, ये देखिए सातवीं दुकान। उसके बाद आठवीं दुकान है, ये जीनत कम्युनिकेशन। नौवीं दुकान, 10, 11, 12। Anjana Om Kashyap, Shubhankar Mishra and Pooja Shali for India Today. Let's give you now a quick view of what this area basically looks like. Remember, in one Delhi, there are many Delhis and Jahangirpuri is one such area. Why is this roundabout or charaha, as it is called, is so significant? This is the same street where on April 16th, the violence had broken out. Just about 100 meters is a mosque. 100 meters after that is a temple. There is a Ramlila ground. This is exactly where the violence at least had started and then went on to become a full-fledged rampage. On this street is where Sonu Sheikh, remember the man in blue kurta who had fired at the crowd, was taken into arrest. He was living there. Prime accused Ansar, who was flaunting gold jewelry, lived in this area, the C block area as it is called. Many call it the Bangladeshi colony as well. Now, amid all this, there is, of course, many people involved in today's demolition drive that started. Who are those important faces? Let's begin. Adesh Gupta of the Delhi Bharatiya Janata Party was one of the first to demand the demolition of the area. When the demolition was approved, it was done by Raja Iqbal Singh, the North MCD mayor, who approved, and then, of course, the JCBs were sent. To seek police help for the drive was Assistant Commissioner NDMC at the Civil Lines Zone to ensure that police reinforcements help the demolition drive to be carried out peacefully with the law and order maintained. And Deependra Pathak, Delhi Special CP, overseeing law and order, sent in reinforcements that are still staying put till the issue and clearly the area remains completely peaceful. So while these shops were being demolished by the JCB sent by the MCD, it was a full-blown political showdown. Remember, the MCD, currently the in charge of the corporation, is the Bharatiya Janata Party. The elected government in Delhi is the Aam Aadmi Party, and there was a massive blame game at each other. Even CPM leader Brinda Karat jumped into this and asked these JCBs to stop the shops from being demolished, and only that happened after the Supreme Court order copy was received. Take a look now of our netas bickering while there was first a communal flare-up and then a demolition drive here in Jahangirpuri. Bulldozers in action, tearing down alleged illegal structures. As demolition squad hit Delhi's Jahangirpuri, bulldozer politics peaked. BJP's GVL Narasimha Rao, in a tweet he later deleted, called JCB's Jihad Control Board, exulting at the demolition drive and sending a message that it was punishment for rioting. The BJP and Aam Aadmi Party too were at loggerheads. Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan accused the BJP of singling out the Muslims to disturb peace. But the BJP stoutly defended the demolition drive. देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोज़र की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोज़र चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोज़र चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती है, गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं, और अगर बुलडोज़र चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोज़र। इस प्रकार के लोगों के ऊपर कानून का बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। दिल्ली में आज ये जो कार्रवाई हो रही है, पूरी दिल्ली इस प्रकार की कार्रवाई का इंतजार कर रही थी। जिस प्रकार की पत्थरबाजी, बम, हमले, गोली बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा चलाई गई हनुमान जन्मोत्सव के दिन, यहां तक कि पुलिस वालों तक के ऊपर हमला करने की हिम्मत की है। आज का ये कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई, दिल्ली में न्याय, कानून और संविधान के राज को स्थापित करने के लिए निर्णायक साबित होगी।
AIMIM chief Asaduddin Owaisi alleged that the BJP has declared war on Muslims in the garb of anti-encroachment drive. Hours after the bulldozers took down the last structure, Congress MP Rahul Gandhi, who's abroad, called it bulldozing of India's constitution and state-sponsored targeting of the minorities. But the BJP said that Muslim victim card is being played to communalize a regular anti-encroachment drive. आपकी नज़र में सारे मुसलमान जो है वो जिहादी हैं, इस सीधे सीधे आप ये कहना चाहते हैं, तो फिर मुख्तार अब्बास नकवी साहब क्या हैं, शहनवाज हुसैन साहब क्या हैं, सैयद जफर इस्लाम क्या हैं, एमजे अकबर क्या हैं ये लोग? जो गुनाहगार है वो गोत्र से नहीं गुनाह से गिरफ्तार होता है और गिरफ्त में आता है। अब कुछ लोगों की दिक्कत यह है कि इस तरह के क्राइम को भी कास्ट के साथ जोड़ देंगे, कम्युनिटी के साथ जोड़ देंगे, कनेक्शन के साथ जोड़ देंगे। क्राइम और करतूत महत्वपूर्ण है और जो क्राइम और करतूत इस तरह की कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। CPM's Brinda Karat was the lone politician to reach the demolition site to convey the SC order to MCD officials to stop bulldozing. Given an order for status quo. I have conveyed that to the senior police official. He has assured me no bulldozer, nothing is going to be raised as of now, and that's why we are appealing to the people of Jahangirpuri. Please maintain peace, please maintain harmony. The bulldozer has stopped. Have the illegal encroachers become a political football in Delhi? Bureau Report, India Today. A special telecast from the ground in Jahangirpuri, where at least 20 shops and establishments were razed down today morning, and the demolition drive only ended when the court order came. So the people, specifically the neighborhood here in northwest Delhi, woke up to a shock with the JCBs right around their houses and shops and ready to raze it down. Many people were overwhelmed, teary-eyed, were seen pleading and begging and asking for their shops to not be demolished. But eventually they were seen collecting the rubble in the area. Remember, the MCD calls it an illegal, unauthorized construction, while many local residents say at least should have given a notice. And importantly, they've been living here for many, many years. Take a look now at what the people have to say. Surrounded by Delhi Police, Municipal Corporation of Delhi bulldozed their home and shops in Jahangirpuri of the capital today. The court order stopped them, but by then, Rakesh's juice shop was also gone. यहाँ पर जब बुलडोजर चल रहा था तो आपको किसी ने फोन करके बताया यहाँ पर? जैसे हम लोग आए, जैसे तोड़ना चालू कर दिया, पहुंचे थे उससे पहले से ही। हाँ जी। मुझे एक बात बताइए कि ये जो दुकान थी कितने समय से यहाँ पर थी? जी ये 15-20 साल हो गए इसको। 15-20 सालों से। और आज अचानक से बुलडोजर चलने लगा अचानक से। तो क्या यही आपकी आमदनी का एक सहारा था? यही आमदनी का सहारा था जी, जूस का। हाँ जी, जूस का शॉप था हमारा, ये गन्ने का। कितना कमा लेते थे दिन का? इस वही 3-4 हजार रुपए कमाते थे, जिसमें 1-8 हजार रुपए बच जाता था। Ruxana Jahan is shocked and refused to come out of what's left of her home. मैं बीमार था, मैं घर का अंदर सो रहा था, ये तोड़ ताड़ के चला गया। आप सो रहे थे तब? हाँ, मेरा तो भी घबराहट हो रहा है, सब पुलिस वाला आ गया, मेरे को डर लग गया, तो मैंने जो कर रहा है मार के चला जाए वो भी मंजूर है। मेरा आदमी नहीं है, 2 बच्चा और बहू है। एकदम अचानक से अगर कोई चीज हमारा आशियाना टूटता है और पब्लिक को इस तरह का धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो लेडीज सब सुबह से बोल बोल के थक गई, इससे पहले भी डरी हुई हैं, तो किस तरह बातें करें बताइए। एक तो रमजान का महीना है, सब रोजे से हैं, किसी के हलक में पानी नहीं जा रहा है। तो तोड़ा नहीं है, ये टूट गया, जब तोड़ना था हिस्सा ही तो ये भी तोड़ना था, ये नहीं तोड़ा, ये तोड़ा। अब अलग अलग तरीके से कार्रवाई हुई है, अलग अलग कारीगर से एक तरफा हो रहा है ना, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। The mosque on the side of the road, which was in the center of 16th April riot, was not spared either. इतना तो टाइम देना चाहिए कि सामान निकालने, हमारा नहीं निकला कोई बात नहीं, मस्जिद का गेट निकाल लेते, वो लाखों रुपए का गेट है देखो।
उसके 2 पेज खुलते वो अंदर हो जाता, चाहे तोड़ ही देते। ये मस्जिद का गेट टूटा हुआ है यहाँ। 2 मिनट का टाइम देते हैं ना, तो 2 मिनट में लाखों रुपए की वो सब चीजें जो है ना बच जाती है। अब इन्होंने तोड़ा और उसको ऐसा कर दिया डिमोलिश कि वो रिपेयर दोबारा मॉडिफाई भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। They are trying to salvage what they can of this particular shop, but they told me that the way that the gate of the masjid has been broken, it's been broken in such a way that this will not be able to be repaired again or modified. And this was the point and the flashpoint of discontentment on the day that the violence broke out, because here was where there was an attempt, so said, by people to unfurl a saffron flag, but ultimately the politics of Bulldozer, leaving people here distraught because their businesses have been destroyed. Gupta ji's shop is a stone throw away from the mosque in the corner. It too got bulldozed. डीडीए ने अलॉट कराया था, उसकी फीस भी जाती है 4800 रुपये सालाना। सारा मेरा कागज है, सब कुछ है। और आए पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाते थे, लेकिन कागज देखते थे, कागज देख के फिर चले जाते थे। इस बार कोई कागज देखने को तैयार नहीं। मैं कागज दिखाता रह गया कि भाई कागज देखो, कागज देखो। अगर कागज नहीं भी देखते हो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया 1 घंटे पहले कि अतिक्रमण रोका जाए, लेकिन कागज मेरा तो लीगल है। डीडीएस अलॉटमेंट की दुकान है, 1977 से बैठा हुआ हूँ मैं। पहले मेरे फादर थे, अब मैं कर रहा हूँ, अब मेरा बेटा कर रहा है, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं हुआ। ये जो अवैध बने हुए हैं इनको तो छेड़ा नहीं गया है, क्योंकि ये पीछे 25 गज के मकान है। उसके बाद इन लोगों ने अंतराइज में 50 गज मस्जिद के आड़ में दुकानें यहाँ से वहाँ तक बनवा रखी है। मंदिर के और मस्जिद के आड़ में जो अवैध बने हुए हैं, जिनसे कम से कम कुछ नहीं तो यहीं से सारी गुंडागर्दी, सारा कुछ यहीं से होता है। वहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। And ultimately, the politics of Bulldozer has reached Delhi, and people, the Aam Aadmi, is the only one that's suffering. With Ashok Banod from Jahangirpuri, Milan Sharma for India Today. In eye of the storm is the prime conspirator of the communal clash, Ansar, who was arrested right from this location in C Block area. Now, there are some links, political, criminal, that are now emerging against him. In the eye of storm is the prime accused, being seen as a conspirator who allegedly incited violence and communal clashes in Jahangirpuri, Ansar, the man flaunting jewelry and flaunting with a luxury vehicle. But importantly, we have accessed some history of this man. Who is Ansar? What are his previous links? And why has he become one of the main accused of the violence? Take a look at this. Ansar, the face behind the Delhi riots, now in police custody. He could be a key to cracking the case. Sources say Ansar had received a phone call from the local masjid just before the clashes broke out. On receiving the call, Ansar approached the Hanuman Jayanti procession with 4 to 5 people. The argument that ensued ended in violence that left many injured. The police is investigating Ansar's phone records. The main suspect in the riots case also dabbled in politics. The BJP and Aam Aadmi Party are accusing each other of links to Ansar. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, दिल्ली का एक सांसद। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगा हुआ, हनुमान जन्मोत्सव पर जो अटैक हुआ, गोलियां चली, उसका मास्टरमाइंड अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पाया गया है। सारे फोटो आ गए हैं, प्रमाण आ गए हैं, सब कुछ। और थोड़े दिन पहले दिल्ली में जो दंगे हुए, उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन पाया गया था। क्या आम आदमी पार्टी कोई दंगा फैक्ट्री चला रही है? ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है, और ये वो टोपी पहन के अंसार यहाँ पे दिख रहे हैं। और देखिए टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। Politically connected, Ansar is a scrap dealer with interest
in gambling business. He has numerous cases against him for allegedly running gambling rackets. Images of his not-so-humble life have emerged which show Ansar flaunting money and gold. As police dig deeper into Ansar's business links, more skeletons could come out. Bureau Report, India Today. That is all from me for today. This was a special telecast to help you understand what exactly happened through the morning and continues to become a showdown between netas and specifically angry public as well. Remember, the streets look calm right now and clear, but will it be as calm with regard to the communal tensions that can still be felt as palpable under the surface? And once the reinforcements leave, that will be the big test. Thank you for watching. Stay tuned. Coming up at 7, our special and continuous coverage on Jahangirpuri.